Hello everybody. Yes, hello. 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 Yeah. So welcome to the STC Ranchi Software Development Community Ranchi. So we are the community where we talk about software development, mobile application development, like new trend things like AI and bot or automation kind of software development. So today we have a session for software and website development, whether it is web development, mobile application development, and desktop application development, and also how we design the mobile application and software in a Figma, so UI UX part, and as well as the marketing like digital marketing. So we are covering all in this session. So we have the speakers. Let me introduce our speakers. So we have speakers Sourav. He's a full stack developer and he is going to explain us the mobile application development. And we have next Ravinder. He is going to explain us the web development PHP Laravel. We have Umesh. He is going to explain us the desktop application development in .NET MAUI. We have Ravi is going to explain us the UI UX in Figma design. We have Rajkishore, he is going to explain us the digital marketing. So, so thank you very much all speakers and welcome you again in this session. So let's start the session with the Umesh. Umesh is a .NET developer. He is going to explain us about the .NET MAUI. And so Umesh, you can start the session, the application development. Yeah. Thank you. So first, let me share my screen. Is it visible? Yes. Okay. So my name is Umesh Tudu, and I am a developer in Murmu Software Infotech. And today, basically, I'm going to explain about the desktop application and how desktop application is created in .NET MAUI. So mainly today's will be introduction about desktop application. Then I will tell later what is .NET MAUI. Then how desktop application is created in .NET MAUI. So let us start first. As you can see here, introduction. So desktop application is mainly a software program that is designed to run on a computer system. Uh, Mainly this desktop application is installed locally in a computer storage. So there is no need any internet connection to run this type of application. So this is about the desktop application. You can see here, this type of application is run in Mac iOS, Windows, and Android. Then further, we come in second topic, .NET MAUI. .NET MAUI stands for multi-platform application user interface. Basically, .NET MAUI is a cross-platform framework. By using, we can develop different types of desktop application. Basically, .NET MAUI was initially officially released by the Microsoft in 2020, but the stable version was mm, released in 2022. So next we come how the desktop application is created in the Visual Studio. So you can see here the screenshot. So for creating the desktop application, just we have to open our Visual Studio. So if you open the Visual Studio, you can see the interface like this. So from here, there is an option for creating the new project. We will select this option, create a new project, and then next we will select the template. Here there is a search option here.
So we have to search here .NET MAUI. So different types of templates will appear here. The first one, this one, .NET MAUI app, this one we have to select and hit the next button. Further, we have to select here the project name. The project name can be anything as you can name it. In my case, my project name is MAUI app 1. You can see here. Then here you have to select the location of the project. Then we come further, uh, we have to select then framework. If you click here, the different types of framework can pull here, either in .NET 9.0 or in some cases you can see here .NET 8.0 also. Then further, the final UI will be look like this. In right side you can see here solution MAUI app 1, then this one is MAUI app 1, this one. So basically this one is the solution and this one is the actual project, and inside this main project you can see the different types of files and folders. Okay, so next I'm going to explain how the page is created in .NET MAUI application and how the API can be implemented in the application. So here I have already created the .NET MAUI project. You can see here, this is my solution and this is my project name demo.NET MAUI app. So first we will create the folder and I have named it pages, and inside this page we have to create the pages. So simply we have to write here, and from here add, we will select the new item, and from this option uh, we go here .NET MAUI, this one, and we will select here content pages here XAML format. Simply we will name it from here. So we can name anything here. So already I have created the page. You can see here I have created two pages like customer and product pages. In customer page, actually this is the main page where we design the UI side, and inside there is a code behind. That means customer xaml.cs where we write the different types of logic as we required. So here I will show you how can we design a simple pages. So firstly we will take a grid, then we will define the grid dot column definition, and then inside column definition. Column definition, and we will set here width, sorry, height. Okay, column definition. Let me paste here two times. Similarly, we have to define the row definition just below. Create dot row definition. Then inside it, we'll define the row definition, this one, and we will set here the height and height photo. Or let me paste 7 times here. So this is the designing of grid, how we define the grid. First we define column definition and row definition. So here basically I am showing you how a normal form is created. So I will take here label, down below this one.
We will name it suppose customer name. Then I will define here row suppose 4. Then I will define here column suppose 0, horizontal option start. Then I will define font attribute as bold, and I will give here some margin suppose 0 and 0. This one is the label, and in similar ways I will define here the entry just for data inserting. So let me take entry. Entry here will be placeholder. Placeholder can be anything, like customer's name. In the same manner here I will define the grid for the row and column. So simply I copy here. Row will be 5, column will be 0. Okay, it is correct. Start from margin. Okay, let me paste 2 times this code here. I will rename this label suppose city. Correct. Placeholder will be city. Label will be state. Placeholder will be state. Column will be changed here, like here will be 1, this will be 1, row 4 it is correct, column will be 2, column will be 2. Okay, so let me build first here. Then I will build it. It takes time, so let us wait for some time. So you can see here done, building is completed successfully. It is taking time, so let us wait for some time. Generally this type of application sometimes take a time for completely building. So you can see here build is successful. So you can see here this is the default page here, and here there is a button. So if I click here,
I will redirect into the customer page, which I created before some time. You can see here, here is customer name, here is city, here is state. You can see here entry here, customer name, then here city and state. We can modify. Let me modify. Suppose with request 200. With request 200, and here also in entry with request will be 200. So here you can see the label. This one is the label and this one is the entry. Let me create two buttons. Uh, Text. Suppose this button will be save button. Uh, I will define here its width request. Suppose 100. Then further I will define here its row and column. Grid dot column suppose 0. Grid dot row suppose 7. So you can see here this is the button. So let me modify that. I will give here margin suppose 0, 180, 0. So you can see here button is well appearing here in the page. I will set here horizontal option like start. Okay. Margin suppose 10. So you can see here button is correctly appearing here. So this was all about the pages, how we can create the pages in .NET MAUI. So I have created here, you can see customer name, city, state, and this one is button, save button. So next I will explain how the API is consumed in save button, post API. I have already created the API for the demo purpose. You can see here customer, this one. So I will show you how this post API will integrate in this button, save button. So if I click here try out, you can see here this is the model schema. So for that in .NET MAUI in the pages, first we have to create the model schema. So I have already created here models for the get API and for the post API. You can see here customer VM is my VM view model. All the properties you can see here the same. You can see here ID, customer name, city, state is this similar in the APIs like ID, customer name, city, and state. So here first we have to create the model. You can see here already I created model like customer VMs. So next we have to create the API service where we can call the uh, URL, API's URL. So let me create a method to call the API. Public async task. Here I will pass the VM, customer VM, this one. This one is VM, and I can name it anything as the method name, like add customer. Then similar, the model will pass here. Then here will be object anything like customers.
Then first we will serialize this object, customer objects. So let me console it first. Console dot write line. uh, okay, posting data name can be anything here. Posting data, there is a JSON serializer. So JSON serializer, JSON serializer dot serialize. Here I am serializing this object customer. So simply I have to pass here. Then this serialized object I will store in a variable. So let me take a variable like data, and simply I have to put here in data. Then I have to take another variable like customer data, and here actually I am fetching the actual URL of post method, this one. If I execute this one, I will get the URL of this API, post API. You can see here. Let me copy this one. Wait, here will be HTTP client dot post JSON async. Post JSON async. Then simply I have to pass the URL here, and here subject will be passed. Then now customer data, this variable I have to check whether it is null or not. So let me check it. If customer data is not null, that means there is some values here. Then simply I have to return this customer data. Return away this customer data. Then here will be content. Then content will be read from JSON async, this one. And here simply I have to pass the same model here. Otherwise here will be false. I am returning null values. So this is the method by which we can fetch the data from APIs. And now add customer, this method I have to explain, or I have to mention inside the code behind page. So this is code behind page. You can see here in the solution, this is page and this is code behind page is here. So I have to explain this this one, add customer, this one. So let us come in customer.xaml.cs file. Let me initialize a variable. Okay. Customer VM, this one. Giving some error here. It's okay.
code. I have to set a click event here in customer pages, customer XML pages. Since I have already defined here button, so this button will be clickable here. So for that, I have to define the click function here. So name it save button, save button, save. Then I go to its code behind page here. I will define here private thing. Here will void save button. Here will be passed object sender and events are. Now I have to define the object of this class customer VM. So let me take a variable like data customer VM, and simply I have to map here the uh, object name. Suppose a customer name, then city, and then state. And for that, in customer dot XAML page, uh, customer dot XML page here, I have to define its name, and we can define like this name property like customer is the similar way here will be okay city, and this one is state. Okay, so first I will map here entry customer name here. Customer name is equal to customer name this one customer I think it is giving some error, but the method or process is similar to here. Simply you can see here this one is the method, this one is save button, and inside this save button I have explained uh, how the data is mapping. So you can see here simply I will explain here from these pages. uh, this one is customer xml.cs code behind page, and simply we have to explain this one under save button. All this simply I have to create a
customer object, this one customer data, and simply I have mapped the name and city and state. And further here the actual method in API add customer I have stored in save customer data, and this one is object, and simply I have checked this save data whether it is not null, then the page will show us the success message here. Customer, city and state. Okay, let me build first. Now it is fine. Application is building. Let us wait for some time. Generally it took time. So you can see here how I have already defined the grid. You can see here the grid definition, column definition, row definition, and how I have take the label for the label, entry for the insert the data. You can see here all these I have set like grid row, grid column, margin, font attribute, like this. Okay, build is completely successful. Let me run the application. Okay, let me input some customer name like Rahu, Poker, and state Jharkhand. So you can see here data is successfully submitted and the message is appearing here, data saved successfully. If we can check the APIs, customer API here, you can see here the new record is successfully inserted. You can see here customer name Rahul, city Kokar, and state Jharkhand. You can match here customer name Rahul, city Kokar, and state Jharkhand. The same record is inserted in the API.
Here you can see here, customer name Rahul, city Kokar and state Jharkhand. So by this process, we can create a simple page, and we can create different types of component inside a page in .NET MAUI. So this was the all about the .NET MAUI. Uh, Thanks. Thank you, Umesh. You explain us the desktop application development in .NET MAUI in detail. You explain us the API and the .NET MAUI, how we create a component in a desktop MAUI application. You show us how the data is we consuming from the API and we integrate into the .NET desktop front end XML. So thank you very much. So we next go to the next speaker. So we have the next speaker, Ravi. So Ravi is going to explain us about how we design the software in a Figma, because for development of any software or application, we have to first design it into to give some structure, look and feel. After that, the development and starts. So Ravi is the who is responsible for designing the UI UX for the application and software. So Ravi, welcome you on this session, and please start presenting on the UI UX part. Okay, thank you, sir. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Ravi Kumar. I am a graphic designer and UX UI designer. I have more than 3 years experience in this field, and I work in Murmu Software Infotech company as a graphic design and UX by UI designer. So today, what today we will discuss what is Figma and its usage. So let's get started. At first, I share the screen. So let me explain. At first, let me explain what is a Figma. Figma is a online design and prototyping tool. It's also a collaborative design tool for teams and designers. We can use Figma for UI by UX designs, graphics designs, wireframing, diagramming, brainstorming, and remote designs. What is the Figma tool used for? Figma design is used to create, share, and test design for website, mobile apps, and other digital products and experiences. It is a popular tool for designers, product managers, writers, and developers, and help anyone involved in the design process contribute, give feedback, and make better decision faster. So, how do we use Figma in design? There are basic first 8 points in use to Figma design. At first, set up your Figma account, then take a look around the Figma interface. This is a interface of Figma. And third, start a new design file. Now that you are found your way around, let's start making a stuff. Let's start a new project by clicking the menu button, uh, Figma logo in the top left corner, then selecting file and a new design file. Doing this should automatically create a new file with an empty canvas in a new tab on your browser. So this create a frame.
and then 0.5 practice zooming in and zoom out, and practice using the hand tool to move around the canvas. 7 create a text layer. 8 create a rectangle and arrange the layer. Why is Figma used? Figma is a cloud-based design tool that is used to create and test apps and websites. While it provides similar functionality to other competitors such as Sketch and Adobe Activity, the ability for real-time team collaborate is a key differentiator. So today this session, I will discuss a landing page on Figma design. So I am going to Figma interface. So this is a Figma interface, and right left panel. So you will untitled at first, renaming, then landing page. Uh, so this is a landing page for websites. Figma design, we are used to app design and website design. So it is comfortable for designers and developers. It helps to develop any software and websites. So at first, Figma design, I will work to as a design, which is very important and helpful for developer. So as a client requirement, we are designed to create for from Figma as a development. So continue in Hindi these topics. So हेलो हेलो टीम्स, ये इंटरफेस है फिग्मा का, और ये जो लेफ्ट साइड में है वो हम लोग का पैनल्स है। इसमें पेजेज हम लोग ऐड करते हैं, और ये सब जो है नीचे डाउन में ये सब टूल्स है जो इसके हिसाब से हम लोग कोई भी डिजाइन को बनाते हैं। तो सर राइट साइड में ये पैनल जो लेआउट का होता है, इसमें से हम लोग कलर वगैरह यूज करते हैं। तो हम लोग एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग में हम लोग क्या बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसका पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। तो आज मैं ये सेशन में आप लोग को लैंडिंग पेज का बैनर बनाने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग इसमें नेमिंग करेंगे लैंडिंग पेज बैनर। एक्चुअली मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो लैंडिंग पेज जो होते हैं वो मतलब एक वेबसाइट का जो ऊपर टॉप टू बॉटम जो मतलब फुटर तक, इसको पूरे को हम लोग एक लैंडिंग पेज बोलते हैं। जिसमें से ये जो सेक्शन होता है, ये फर्स्ट सेक्शन, ये बैनर्स होते हैं, हीरो बैनर्स, उसके पास कार्ड्स आते हैं, आइटम्स आते हैं, टेक्स्ट। ये हम लोग पर्टिकुलर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ क्रिएट करेंगे जो बैनर्स से, हम देखेंगे हीरो बैनर्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने मैंने एक लैंडिंग पेज का नाम रीनेमिंग किया। उसके बाद मैंने एक पेज बनाया। अब ये है टूल्स। ये टूल्स को ही यूज करके इसमें हम लोग बैनर का इंटरफेस बनाते हैं, जिसमें तो
सबसे पहले हम लोग को मोबाइल के लिए बनाना है कि वेबसाइट के लिए बनाना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेम। तो पहले हम लोग फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। फ्रेम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे से ऑप्शन आ जाते हैं, मोबाइल फोन के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए। तो प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, अदर उस पे हम लोग को जो बनाना है, आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी उनके साइजेस दिए, मैक के लिए मैक डेस्कटॉप वायर फ्रेमिंग। तो एज हम लोग डेस्कटॉप का ही साइज लेंगे। तो ये वेबसाइट वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज का जो मैंने बैनर बना रहा हूँ, तो मैंने एक साइज ले लिया जिसका विथ 14 1440 और हाइट है 1024। तो हाइट हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं, पर विथ जो स्टैटिक है वो स्टैटिक ही रहेगा। और हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप वन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसमें इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो हम लोग के लिए मतलब ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट्स अगर हो जाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, तो हम लोग को सर्च करने में इजी हो, इसलिए लैंडिंग पेज। फ्रेंड से हम लोग ये लैंडिंग पेज बना लिए। लैंडिंग पेज का जो ये लेआउट है, लेआउट को मैंने क्रिएट किया। अब हम लोग को डिजाइन, इससे हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमको टेक्स्ट लगाना है, किधर इमेज लगाना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रिड। तो हम लोग ग्रिड इसमें एड ऑन करेंगे, और ग्रिड में हम लोग एड ऑन करेंगे इसमें कॉलन को। इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक कॉलन होता है, एक रो होता है। तो एज ए यूज डेस्कटॉप के लिए हम लोग 12 कॉलन यूज करते हैं। और मार्जिन और एज ए में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंट का मतलब होता है कि ये जो हम लोग का ग्रिड का जो कॉलम्स दिख रहे हैं, इससे हम लोग को 12 दिए तो हमको यहाँ पे 12 कॉलम्स आएंगे। उसके बाद कलर, कलर इसका जो कलर है, ये कलर हम लोग अपने हिसाब से कम या तो फिर ज्यादा या फिर अदर कलर्स कुछ भी रख सकते हैं। तो इतने तक रखता हूँ। जो देखिए मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब होता है गैप। मार्जिन अगर मैं 35 अगर करता हूँ, तो ऐसे हम लोग का ये दोनों तरफ पे जो गैप दिखते हैं, इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन में इसका 50 कर लेता हूँ। अब होता है गटर। गटर ये दोनों के बीच का जो मतलब दो कोलन के बीच के जो गैप होता है, उसको गटर बोलते हैं। तो गटर हम लोग 25 करेंगे, तो देखिए ये गटर थोड़ा सा ये बढ़ गया। अगर 30 करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ग्रेड का हम लोग का मेन कारण ये होता है कि इससे हम लोग को पता लगता है कि कितना सा में हम लोग को इमेज रखना है, कितने में टेक्स्ट रखना है। तो ये हम लोग को ये करता है, क्या बोलते हैं इसको, कि समझने में वो आसानी होती है एज ए ग्रेड में। देन तो ये हम लोग का ये है। तो अब लैंडिंग पेज में क्या होता है, लैंडिंग पेज में हम लोग सबसे पहले बनाते हैं हेडर। तो हेडर के लिए अगर हमको बनाना है, तो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम लोग का टूल्स है। तो टूल्स में यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल होता है, लाइन होता है, एरो होता है, इलिप्स है, पॉलीगोनल है, स्टार है, और इमेज और वीडियो हम टैग यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो इस हेडर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे। अब ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल लेने के रेक्टेंगल ले लिए। इसके बाद इसमें हम लोग अगर चाहेंगे कलर डालना है, तो हम लोग यहाँ से कलर पिकअप कर सकते हैं। फिल में जाके कोई भी कलर ले सकते हैं। ये कलर, ये कलर हम लोग ले लिए। अब ये अगर हम लोग इसको देख हटाना है, ग्रिड को, लेआउट ग्रिड को हटा के देखना है कि हम लोग का वो कैसा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके इसका जो आइज होता है उसको हाइड कर देंगे, जिससे हमको ये दिखेगा। ये दिखा। उसके बाद फिर ऑन करेंगे, तो मेरा जो ग्रिड होता है, वो जो हाइट है, वो फिर से वो ऑन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा।
तो राइट कॉर्नर में हम लोग जिस टाइप से हम सब लोगो डालते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पुट करेंगे एक लोगो। मैं ये टेक्स्ट ही अभी यूज कर दे रहा हूँ लोगो के में। हम लोग यहाँ पे कलर फॉन्ट जो भी लेते हैं, फॉन्ट्स का हम लोग यहाँ पे नेम से हम लोग कोई भी फॉन्ट को ले सकते हैं, या तो फिर हम लोग डाउनलोड भी करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो मैं पॉपिंस यूज कर रहा हूँ फॉन्ट का, वो उन उसके बाद इसके जो फैमिली फॉन्ट्स का ये होते हैं, साइजेज होते हैं, यहाँ पे दिया हो रहता है, जिसे हम लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक। एजे मैं सेमी बोल्ड ही रखता हूँ उसमें। यहाँ पे होता है कि साइजेज, साइज को अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेंगे, और कम लगा तो घटेंगे। तो मैं एज 32 या 32 लेता हूँ, तो ये मेरा ये साइज है। अब एच लो, ये मैंने लो करके कॉर्नर में कर दिया। तो देखिए, ये ग्रिड से हम लोग को क्या फायदा है वो मैं बता रहा हूँ। एडवांटेज जो हम लोग को मिलते हैं कि जो ये ग्रेड है, ग्रेड का ये जो गैप है और हम लोग का जो गैप, तो ये गैप का बाहर उसका ना जाए, जिससे हम लोग का डिजाइन जो बने वो अच्छा दिखे, सुटेबल दिखे, और लाइन और अलाइनमेंट में दिखे। इसलिए हम लोग ये ग्रेड का यूज करते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे हेडर फाइल में आते हैं, वो सब हम लोग बना लेंगे। जैसे होम, इसको डुप्लीकेट करके हम लोग कॉन्टेक्ट अबाउट अस सेक्शन हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। और ये लोगों के साथ इसका जो फॉन्ट है वो मैच कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉन्ट का साइज को चेंज करेंगे। जैसे अबाउट अस करके 25 कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस से हम लोग जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होता है, उससे करते हैं। ये हम लोग को ये जो ग्रेड है, ग्रेड से ही बनाना है। जैसे हम लोग का ये लिए, तो इससे हमको गैपिंग पता चलता है। हम्म, उसके बाद हम लोग सबको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में हम लोग का ये जो होता है वो सेंटर अलाइनमेंट होता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर। हम लोग का डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक साइन अप बटन चाहिए, तो साइन अप बटन के लिए हम लोग आइकन्स यूज कर सकते हैं, या तो इमेज यूज कर सकते हैं। तो फिग्मा में एक टूल होता है, टूल्स में ऐसा चीज है कि जिसमें हम लोग प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग लाने के लिए सीधा फाइल पे जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम लोग का एक प्लगइन्स करके आता था। प्लगइन्स में हम लोग यहाँ पे भी जो कुछ भी डाउनलोड करके रखेंगे, ये सब ये इंटरनेट से मिल जाते हैं, हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो ये आइकन्स है,
तो आइकन्स का क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग साइन इन का हम लोग चाहिए तो साइन इन का एक साइन इन है तो क्या प्रोफाइल लिख के प्रोफाइल्स में हम लोग कर सकते हैं दिस इज साइन। अब ये जैसे ब्लैक में आ रहा है या कुछ कलर में हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर कलर्स भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो वो सेम कलर में सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाइट करता हूँ कि मुझे व्हाइट ही चाहिए। मैंने यहाँ पे व्हाइट कर लिया और मैंने इसको चूज किया। इसको पहले हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली ये वहाँ पे पुट ऑन हो जाएगा। इसको तो यहाँ पे आ गया। इसको फिर मैंने शिफ्ट और एरो बटन से इसको मैंने राइट राइट साइड किया। और इसका हाइट और विड्थ अभी 100x100 दिखा रहा है। इसमें हम लोग कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो डायमेंशन होता है इसके अगर हमको छोटा या बड़ा चाहिए तो हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ फिर एक उसके उसके बगल में एक आइकन्स दिख रहा होगा। अगर इसको हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम लोग अगर 50 करेंगे तो दोनों में एक साथ ही होगा। लेकिन अगर इसको अगर हम लोग अनचेक करके रखेंगे तो एक में अगर विड्थ बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक में ही विड्थ बढ़ेगा। हाइट जैसा का वैसा ही रहेगा। बट अगर ये चेक रहेगा तो हम लोग एक साथ दोनों का ही काम कर सकते हैं। तो वो हमेशा चेक रखेंगे। इसको भी अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार वो चेक करके किया था तो वो 50% कम हो जा रहा था। ये हो गया। तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये तो होम बटन खत्म। अब यहाँ पे हम लोग अगर एक बार देखते हैं लेआउट को हटा के तो ये दिख कैसा रहा है हम लोग का। वो हिसाब से हम लोग कलर की वगैरह से यहाँ से ये वाइट है ये सब ब्लैक है। अगर मैं इसको वाइट करके देखता हूँ ये अच्छा दिख रहा है। इन लोग का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक साथ भी सेलेक्ट करके अगर करेंगे तो सबका सेलेक्ट करके करने से भी चेंज हो सकता है। और ये हम लोग अगर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है तो हम लोग रेगुलर से इसको हम लोग सेमी बोल्ड में या मीडियम में कुछ भी कर सकते हैं। तो थिंग हम लोग मीडियम रखते हैं जो कि हम लोग का थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये हम लोग का हेडर फाइल एज ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे बनाना बैनर का जो सेक्शन बनाना था तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल यूज करने के में एक पहले हम लोग रेक्टेंगल लेंगे जो इनके साइज का हो। साइज मेंटेन करके हम लोग एक एक रेक्टेंगल मैंने बनाया। आफ्टर दैट इसका अगर हम लोग को कलर चाहिए क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पहले अगर बनाते हैं वेबसाइट वगैरह तो कलर कलर पैलेट सेलेक्ट रखते हैं। लेकिन एज ए ट्यूटोरियल्स पर्पस ये अभी हम लोग का चल रहा है एज ए सेशन तो मैं ऐसे ही इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ। जैसे एज ए हम लोग कोई भी कलर ले लेंगे। एज ए ब्लू का भी है तो ब्लू का कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत डार्क ब्लू ले लेता हूँ और लाइट ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करना है, जो हम लोग को इस टाइप से देखिए, जो मेरा ये जो लैंडिंग पेज है, इस टाइप से हम लोग को बनाना है, या तो अच्छा लगे दिखे, इस टाइप का मैं ये बना रहा हूँ। तो हम लोग को टेक्स्ट और इमेज किस टाइप से, अगर मतलब ऐसे अगर हम लोग को नहीं पता चलता है, तो इसलिए हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे। मतलब अगर हम लोग इसमें टेक्स्ट अगर डालेंगे तो उसका अलाइनमेंट या इमेज का जो मतलब अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं बैठता है। तो इसी के कारण हम लोग जब ग्रिड का यूज करते हैं, हाँ, और एक कलर्स में क्या होता है कि आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट भी यहाँ पे हम लोग का जो साइन दिया हुआ रहता है, इसमें ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट में आप दो कलर को के साथ अभी ले सकते हैं। एक कलर जैसे ये हो गया, सेकंड कलर आप थोड़ा डार्क ले लो, तो हम लोग उसको एक सॉलिड कलर बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जो सिंगल कलर रहता है वो सॉलिड कलर रहता है, इसमें दो या दो से अधिक कलर होता है वो ग्रेडियंट होते हैं। तो हम लोग जैसा मन करे, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा ग्रेडियंट को ही यूज कर लेता हूँ और डार्क लेता हूँ। ठीक। हाँ, तो मैं बोल रहा था ग्रेड। अब जैसे ये मेरा ये ग्रेड हो गया, तो अब ग्रेड का सेक्शन में हम लोग को लगाना कहाँ पे है कि टेक्स्ट कहाँ पे मैं रखूँ और इमेजेस कहाँ पे रखूँ जो हम लोग को सूटेबल रहेगा। और इसमें मैंने एक ऐड जैसे किया है ये बटन्स, वो बटन्स भी मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग जो कुछ भी दो तरह से टेक्स्ट कर, अगर कोई क्लाइंट में अगर हमको टेक्स्ट नहीं मिला हुआ है, कंटेंट नहीं मिला हुआ है, तो हम लोग लोरियम इप्सम का यूज कर सकते हैं। एक बार जिसपे ये एक कंटेंट के लिए होता है, जो डेमो टेक्स्ट देता है, इसका यूज करके हम लोग कंटेंट यूज कर सकते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एज ए टेक्स्ट टूल को क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। अब हम लोग का जैसे ये लोगो है, लोगो का लेयर इतना यहाँ पे है, दो दो ग्रिड के बीच में हम लोग का ये लोगो है, तो लोगो से हम लोग को जस्ट थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे रखेंगे। और इसमें हम लोग साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कंटेंट देखना कि आपका कितना वैल्यूएबल कंटेंट है, कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता है। हम लोग एक यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, और इसी को अगर हम लोग कॉपी करके यहाँ पे बोल्ड करके हम लोग टेक्स्ट करके हम लोग कुछ एक हायर डेवलपर कि मैं कुछ एक बड़ा ही हम लोग हाईलाइट टेक्स्ट और जो मतलब जो हम लोग बताना चाहते हैं वो हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसको बड़ा रखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट रखेंगे, इसका भी साइज सेम बोल्ड करके 25 कर, 22 रखता हूँ। ये यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा, अब ये अब ये तीन जो टेक्स्ट जो मैंने अलग अलग डिवाइड किया है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके
अलाइन करेंगे तो यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल स्पेसिंग। तो हम लोग को वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग करेंगे। तो ये अपना वो स्पेस मतलब ले लेता है। अब इतना होने के बाद हम लोग एक बार देखते हैं कि हम लोग का ये जो डिजाइन होता है उसमें वो कैसे दिख रहा है। तो हम लोग को ये दिख रहा है जब ब्लैक है, इसके साथ अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसका कलर को चेंज करके भी देखेंगे। जैसे ये कलर है तो कलर को हम लोग व्हाइट करके देखेंगे। एज ए ब्लैक ही थोड़ा ठीक दिख रहा है तो ब्लैक ही रखेंगे। और अगर इसका हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम लोग और दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसा ठीक लगे हम लोग वैसा यूज करेंगे अकॉर्डिंग कलर प्लेट के। तो अभी के लिए ऐसा ही व्हाइट रहने देता हूँ। ये होने के बाद हम लोग एक बटन बनाएंगे जो इसको जो ये इसमें जो हम लोग ऐड किए हुए हैं, तो उस टाइप का एक बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए हम लोग फिर से रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। और रेक्टेंगल और ये जो वन ये जो ग्रिड का जो कॉलन है, ये कॉलन में ही मैंने सब टेक्स्ट को रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से ही इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करूंगा और जहाँ पे इसका एंडिंग है इन लोग टेक्स्ट का वहां तक ही लूंगा ताकि उसमें प्रॉपर देखे और सुंदरता इसका जो है वो घटे नहीं। और इससे हम लोग इसका यहाँ पे होता है एप्रियंस। एप्रियंस में इनका कॉर्नर को हम लोग राउंड और ये कर सकते हैं, या तो फिर डबल डबल क्लिक करेंगे तो भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस डिटेल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग चाहे तो एक एक करके एक कॉर्नर को दो कॉर्नर को जितना भी है उतना बढ़ा। जैसे अगर हमको 70 ये 13 रखना है तो मैं इसी को कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो हर कॉर्नर मेरा 13 का हो जाएगा। ये मेरा पूरा कॉर्नर हो गया। अब मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ डार्क कलर्स। अब अगर हम लोग को इसके बाद अगर इसमें स्ट्रोक्स अगर हम लोग लगाते हैं, ये मेरा डिजाइन होने के बाद तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक्स पे आते हैं। स्ट्रोक में हम लोग कलर भी चेंज करके हम लोग वाइट वाइट रखते हैं। और ये इनसाइड है, इनका हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। अगर इसको हम आउटसाइड कर देंगे तो इसका साइज हम लोग आउटसाइड की तरफ से जाएगा। और ये सेंटर है तो हम लोग एज ए सेंटर रखेंगे। पर इतना नहीं, हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। हम्म। अब यहाँ इसके ऊपर हम लोग जैसे टेक्स्ट रखेंगे। टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं। मैं कुछ एक ऐड कर देता हूँ जैसे इसके ये ऊपर। ये मेरा ज्वाइन नाउ का बटन आ गया। इसका हम लोग टेक्स्ट का साइज कम कर। तो ये मेरा ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ग्रिड हटा के देखता हूँ, मतलब रिमूव करके कि हम लोग को दिख कैसे रहा। तो हम लोग को ये टेक्स्ट जो है थोड़ा सा छोटा ज्यादा दिख, जो मतलब विजुअल विजुअल भी नहीं रहा, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। तो इसका हम लोग साइज थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं।
पहले एज ए डिजाइन जब हम लोग करते हैं तो ये सब फॉन्ट वगैरह और जो कलर का रहता है सबका साइजेज मेंशन रहता है, क्योंकि अलग अलग साइज का फॉन्ट अगर रहेगा तो वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है या दिखेगा नहीं। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को फॉन्ट कौन सा लेना है और कितना फॉन्ट, मतलब कौन सा फॉन्ट का साइज कहाँ पे यूज करना है, ये हम लोग पहले डिसाइड करके रख लेंगे। तो ये हम लोग का अभी के लिए ठीक है। नाउ ये टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इमेज यूज करूंगा। तो इमेज के लिए आप कहीं से भी, आप इंटरनेट से भी ले लीजिए, जैसे कुछ भी हायर डेवलपर का भी हम लोग इमेज, हायर डेवलपर इमेजेज, इमेजेज यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से एक डेवलपर का ही सेव कर लेते हैं इमेज, ही हो। इसको हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट फिग्मा में भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे आ गया, पर इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड भी है और ये तो इमेज ही अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो ऐसे हम लोग का प्लगइन्स में रिमूव बीजी होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो फिर आप साइड रिमूव बीजी का भी यूज करके यहाँ से भी ऐसे हम लोग डायरेक्ट इमेज को अपना सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। Hello. Hello. Hi, Ravi. Uh, I think there has been some disturbance in Ravi's side, so he has left. So, shall we continue the session or we'll wait for him? Hello. Let's wait for him to rejoin. I have messaged him, so Okay. we hope he will rejoin again.
हेलो। Yes, Ravi ji. हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, तो हम लोग थे कि इमेज हम लोग पुट ऑन किए, पुट ऑन करने के बाद हम लोग का जो है ओरिजिनल फ्लिप करके हम लोग का जो ये डिजाइन है वो डिजाइन ऑलरेडी हम लोग का ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है जो लैंडिंग पेज। सो अगर हम लोग इसमें और भी कलर या कोई भी चीज को ऐड करना चाहते हैं या तो फिर हम लोग को लगे कि ये अच्छा नहीं है तो Your screen is not visible. क्या सर? Your screen is not Screen, visible. screen, share your screen. ओह, हेलो। Yes. सो हम लोग इसमें हम लोग पुट पुट इमेज करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्लिप करने का ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स कर सकते हैं। अगर जैसे इस टाइप से था, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग को फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से वो ये उसका जो साइड मूवमेंट होते हैं वो वन टू अनदर प्लेस मतलब जा सकता है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लगाएं, लोगो लगाएं, ये सब चीज़ अगर आप लोग को जो कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगे या तो फिर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लैंडिंग पेज था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको रन कैसे करते हैं। या तो हम लोग का यहाँ पे एक बटन होता है जिसको प्ले बटन बोलते हैं। इसको हम लोग प्ले करेंगे तो हम लोग का डिजाइन कैसे एज ए डेस्कटॉप या मोबाइल ऐप का अगर बनाते हैं डिजाइन तो मोबाइल ऐप में कैसे दिखेगा वो इससे हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग का डिजाइन ओ ये हमारा डिजाइन ऐसे दिखेगा एज ए डेस्कटॉप में। सो ये मेरा सेशन, आज का सेशन मेरा ये लैंडिंग पेज का बैनर बनाने के लिए था। सो मैंने आप लोग को ये बताया एज ए फिग्मा डिजाइन में कैसे बनाते हैं। तो आप लोग को होपफुल अच्छा लगा हो। थैंक यू। Thank you very much, Ravi. You explained us the Figma design of a banner for the landing page. So thank you very much. You थैंक explained यू। us detail. ओके। So next we come to the digital marketing. So our speaker Raj Kishore is going to explain us about the digital marketing. So let me introduce Raj Kishore. Raj Kishore is a digital marketing expert. So he will tell us about the digital marketing tactics, how we do the digital marketing, and what are the the terms there in digital marketing. So he will explain us, and also he will go to our practical. So Raj Kishore, welcome you to this session, and please you can start presenting the topic. Thank you so much. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। Okay, Ravi ji, you can stop share your screen. ओके ओके ओके। या Hello. So let's start the session on digital marketing. First of all, let me introduce myself. I'm Raj Kishore Hembrun. I'm a digital marketer in Murmu Software Infotech. So the topic for today that I'm going to present is digital marketing, what it is, and the types of digital marketing, the benefits of digital marketing, and I'm going to showcase how we set up ads in Facebook today. So let's start.
I hope my screen is visible to everyone. Okay. Yeah, So, visible. okay, thank you. So whenever we see, like whether it is your YouTube, you see here, this one here, this one, it's written use Adobe Scan to turn paper docs. This is a ad that is run by Adobe company. Okay. And if we see here in Google, you see here it is written sponsored. So this is another ad which is for a Google ad. And let me again show you uh, how the ads are seen in social media platforms. Like here we are in Facebook, and you can see at my uh, right hand side it is written sponsored, and if I scroll the page, you see here there is a video ad that is being run by Adobe Creative Cloud. This is also an ad. So I'll explain what is digital marketing. Everyone is aware of digital marketing in today's time. So digital marketing is the use of online channels to promote products and services. Okay. So like the old traditional method we used to use, or it is been practiced now also, like the TV ads we see, uh, and the the banners in the roads, or the pamphlets that is been handed over to you by someone, um, by some man or anyone. That is a traditional method of marketing. So today the digitalization has been at its peak, and everyone promotes their services or products digitally. So we see that digital marketing is the use of online channels to promote products and services. Like for example, if we say we have a clothing brand using Instagram ads to reach potential buyers. Okay. So what are the digital platforms? So the digital online channels for digital marketing, some of these are like we have search engine like Google, in which the SEO and Google ads are run. We have social media like Facebook, Instagram, LinkedIn, and so and so. And we are aware of Google ads, Facebook ads, Bing ads, AdRoll, Taboola, and website and blogs are also a medium or the channel uh, via which the ads are run. If you see, like there are many platforms, I'll just read it out to you. Like we have email marketing, we use e-commerce platforms like the Amazon, Flipkart. It is also being used for marketing. We have affiliate marketing. You have gone through or seen like in the YouTubes, they talk too much about affiliate marketing. We have local listing in Google My Business. That is also a kind of digital marketing. It is a channel. We have video and streaming, as I showed you in YouTube here. Uh, this is a video ad, and this is run in YouTube channel or platform. Okay, so we also have mobile marketing. In mobile, the medium is the WhatsApp. We have the SMS that comes to us. Okay, so these are some of the online channels for digital marketing.
So next we will move on to types of digital marketing. So types of digital marketing, we first have the SEO, that is your used for optimizing websites for search engines, that is search engine optimization. You are aware of it very well. So for example, we have a blog and you are writing a very good content that on Google, and when someone searches for it, so they find it in the top listing when it is searched. So that is SEO, search engine optimization. We have PPC, paid ads, that is pay per click, that is run on Google and social media. Okay. So next we have social media marketing. Used in platforms used are Facebook, Instagram. We have many such social media platforms. We also have email marketing. This is also a type of digital marketing. We have content marketing. Okay, so I'll now showcase how the ads are set up in Facebook, and I'll also show you a little bit of the Google ad setup. How I'll not show you how it is done, but I'll only show you the dashboard. Okay, let's see. Now we are into practical now. I'll show you. This is our Google Ads. This is a dashboard of it, and from here we can create campaigns, and we have a lot of things here. So this is how Google Ad the dashboard looks like. Okay, I'm not going to explain for today the Google Ads, but I'll show you how the Facebook ads is set up. Okay, so let's come to Facebook here. We have a page that is Murmu Software Infotech Company. Okay, let me show you like how the preview, or when we scroll, you see here, this is done by Google, and they are running image ad for what, for Google Ads. Okay, and if we see, okay, I want to show you like video ads and carousel ads. These are some category of Facebook ads. Okay, let it be then. It's not showing. I'll now fast forward move into how the setup is done. Okay, so let's say we have a page here named Murmu Software Infotech Company. This is a page, and the simplest way, like I'll explain like two things here, three things. One is the simplest way to run an ad is through boost ad, and we'll see also to create an ad and the campaign, how it is done. Okay, so I'm here in my page, and I have a post that is done for software development community Ranchi, and we see here our option right here where my arrow is. Here we can see boost post. Okay, so this is one simple thing, and when someone wants to run their ads by themselves, so they can choose from here. Okay, so like this is the what we can say, you don't need the experts like us when you just want to. It is yeah, it is not that what we can say, it is not it is profitable, but in not that sense. Okay, so this is the simplest one, that is to boost post. Okay,
Now we'll move on to the industry experts like uh, what we do is we run our ads through ads manager, or in which there are a few steps like let me go from here. We have a create ad. First, I'll like to show you the dashboard that is managed the ads from where we manage the ads. Okay, so here I've already set up one ad. Like we have various ads, and the first one you can see here that it is promoting a website. Okay, and this was an ad that we have 92 link clicks, and it has 1462 reach, and impression is this much, and the cost you can see it is very minimum, like 73 paise per link click. Okay, so this is what we are capable of. We can, and it is been run from like yesterday, and it will end today. So just to showcase for you, I had to set up an ad, and I had to invest 300 rupees on it. Okay, so like when we are we see each and every aspect, we can lower the cost. You see how much the click is going, 0.73 per link click. Okay, so let us come here and we'll set up one simple ad. Okay, so create a new ad. We have okay, so it says goal here, and it is automatic. Now we want to change it, so let us take for more calls. Okay, this is good for sales. Okay, and here it is we need a description. Let's say mm, adding a short description for you. Okay, and from here we'll select the media. Okay, there are already some medias, and we'll upload our new one. Okay, just for example we'll select any one of it. Okay, uh, here at the bottom you can see it is showing 3 out of 5. Okay, so we'll delete 2. Okay, and we'll select only the one that we want to showcase the audience as ad. Okay, so this is here comes my image. Okay, we'll give a headline, software development. Okay, it's good, and we have set up like for call. A special category, advantage and creative, we don't need anything to do. Okay, we'll set up our audiences, like whom we want, like here age. I want people from 22 to 50 years of age. Okay, men and women both. Location I'll choose like let's say Ranchi, Jharkhand. I'll also choose like Odisha. Not this one.
Okay, I chose two location like Ranchi and Delhi. Okay, I can adjust the kilometers like the expand of the location. Okay, and then we also have here like detailed targeting. In detailed targeting, we can choose from here whom we are targeting. For our in our case, we have like we are choosing softwares. Okay, so we'll go to interest and we'll see like technology we have here. In technology, we have computer science or this one. Okay, so business and industry, we have advertising, marketing, we have all these things here. Okay, we can choose anyone what we are targeting, what the interest of people will see. We have to choose that. Okay, we have chosen, and we'll save the audience. Okay, and then we have the location, we have the age, we have the interest of audience we have chosen. Okay, then we'll come to the duration, like for how many days we want to run. Okay, so if I want to run like for 3 days, okay, it's saying that ads that run for at least 4 days tend to get better result. Okay, let it be 4 days. Okay, today is 1st of March and it will end on 5th March. Okay, we'll also set our daily budget from here. Like we can see it is 200 per day, so it is showing estimated that 3.6k to 10.5k of reach, like this many people will be able to see this ad. Okay, so if I want to like increase the amount, let's make it 300. You see the reach has increased. Okay, so total amount will be 1416. Okay, so everything is set now. You can see the preview right here on my right side. Here you can see we have the description, short description, we have the poster, and we have the call to action here. Okay, so as soon as I publish this, okay, so let's publish this. You see here uh, the Facebook, the Meta is one is telling us to pay how much, 1367 rupees point 16 paise to run this ad. Okay, when I click next, I'll get the QR or the payment method. Okay, okay, you see here when I'll generate the QR, it will give me a QR and I'll scan this. So the payment will be done and then the ad will be active. Okay, so this is how the ads are run, and this is how the preview, like when we use Facebook. So uh, Facebook and Instagram, if we like mine is linked, both are linked. Facebook and Instagram both are linked, so it will be visible on Instagram as well as in Facebook also. You see, like this will like this it will be visible when someone that the interest that I have set
interest. What we said was we wanted like tech guys or who are interested in technology, they will see my post or they will see my ads, so it will be visible to them in this manner. Okay, this is a video ad. Let us scroll down and see if there are any image ads, single image ads. You see a Snapchat. Okay, so this is how my ad will also be visible to the interested audience. Okay, so this was uh, how the ads are created. Okay, so that was a basic ad that we created, and I would like to also explain the third thing that I said. The first was boost. Okay, the second was to create ad. That was also a very simple setup, and we have the third thing in which we very closely choose each and everything like in detail. Okay, you see, like from here we have campaigns. I can create campaigns from here, and in that we have two lots of things that is to be kept on mind, and we we keep in mind, and like everything, and we set up the campaigns like it is a very detailed campaign. Okay, so I'll just show you the setup. So you see, we clicked on create, and we have a create new campaign. So buying type will be auction, and choose a campaign objective. Let's say I want to have awareness. Okay, I'll continue. I'll not go into detail. Just I'll show you some basic stuffs. Okay, so you get an idea like how the ads are run in Facebook. Okay, so they are saying to create a campaign name. How the campaign name is set up, like we want software development. Okay, the location Ranchi. Okay, and we'll also put on date, like this is the correct method of naming a campaign, so that you so that we don't get mixed up. Like we have multiple campaigns going on for various companies, for various agencies. Okay, for various individuals. So we name like this so that we are aware that this is for the like the dedicated person. Okay, so again we have special ad categories. We need not to touch that. Special categories comes like financial, employment, housing. Okay, so we are not into that. Campaign details, our campaign is auction type. Okay, we have awareness objective, and we'll move on to next. Here it is telling us to add a set name. Okay, we have awareness ads, so it's asking us like we have options to fill, like we have maximize reach of ads, we have maximize number of impressions. What we want, maximize ad recall lift, we want the first one. Okay, then we need to select the Facebook page that we want our ads. Like I want to have the ad from Murmu Software Infotech. Okay, we'll also have here the cost per result. Okay, this is optional. We can fill it, or we can leave it. Okay, budget and schedule, we can like what will be our budget, what the
the pocket demands. Okay, we have the start date and the end date here. We can set that. We have audience controls, we have location from here. Okay, and then we can move to next, and in next what we have here is the preview, add preview. Okay, so since we have not selected anything, we don't get any preview from here. Okay, so this will go into detail, and after completing everything we'll publish from here. Okay, so for today I'll not go into detail, and I showed you three things. Like the first one was to boost. We have a post. We have done a post, whether it be a carousel, a video ad, video, or a single poster. From here we can boost. Okay, this was the first thing I told you. Then the second thing I told was to create a new ad from here. Okay, let's leave this. Okay, so like we are in page, we'll go to ad center, or we'll from here create ad from here. Okay, this was the second thing I told you, and the third I showcased like the proper setup, the campaign that we set up. Okay, this was the three things, and I showed you three different kinds of ad setup, not in detail, but you definitely you are able to get the concept, like how the ads are set up, and how the ads are featured. Okay, in different platforms. So I'll like next discuss the benefits of digital marketing. Hope you are getting me. I'm not confusing you all. Okay, so the benefits. Let's talk about the benefits of digital marketing. So we, like, suppose you are sitting somewhere in village of your own, like say in here Ranchi, what we have places like say Dangratoli. You are sitting in Dangratoli and you are running an ad, and you are running for like you can run for any country. Sitting in Dangratoli in a small village in Ranchi in India, you are running for USA. Okay, you are running for any traditional dress or clothing or any services or products. Okay, so the thing here I want to tell you is that we have a wider reach. We can reach global audiences. Okay, for example, I have also set written here like selling handmade crafts worldwide through an online store. Okay, so sitting here in Ranchi, you can sell your products in USA. Getting that? Okay, so we have a wider reach by doing digital marketing. Okay, these are some of the powerful things that can be done via the digital marketing, and it is also cost effective, cheaper than traditional marketing. Okay, it's like running a Facebook ad. It will cost you like if you are keeping 300 a day, your investment is 300 a day, and you are running it for 7 days. 7 into 3, it is 2100. Okay, in 2100 you are showing your products and services to the whole world. Okay, the third benefit is you have a targeted audience. Okay, you can show ads to the right people. Suppose you want to sell your traditional handmade cloth to only men's. You have a proper selection, like I showed you from here. We can select like whom we want to, whether it will be a man or woman, or you want to show to all. Okay, let me come back to the benefits again. We saw like we have a wider reach, it is cost effective, we can target our audiences, and the results are measurable.
Whether it means like let me go here again. I'll you see here we have a detailed measurable results of everything, like from which area, how many people have reached, how many people have seen, how many people have clicked. Okay, so that is what my point is. So we can measure the results. Okay, so this was some benefits of digital marketing. At the end, I'll also say that it is far better than the traditional marketing. It is also very beneficial, but to a limited area. Like if I want to, like if I'm using uh, traditional method, I'm giving the company, like I want to showcase our company like Murmu Software Infotech. We are developing these things, and I have a banner in a roadside. Okay, so the audience that will reach my company to will be of a limited. It will be a limited reach. Like only the people in Ranchi will able to know that I'm Murmu Software Infotech is a company that is based in Ranchi. Like the Delhi people or the Mumbai people, they won't know. So this is what the power of digital marketing is, that I can showcase my product and services to the whole world and to the audience that is interested in this field. Okay, so hope I have presented my this session. I have presented the digital marketing, and you have not got confused. Like you definitely have got an idea of how the digital marketing thing works. Okay, so definitely we'll meet in the next session, in which I'll go into detail. Like we'll see the Google ads, the Facebook ads, and every ads, the YouTube ads in detail. Okay, so thank you for keeping your nerves, and you are with me all the session. Thank you everyone, and we'll meet in the next session. Stay tuned for advanced digital marketing strategies. Thank you. Hello. 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 Yeah. So, Raskishore, thank you very much to present on digital marketing. You have explained it everything in detail, the digital marketing and its strategy, and how anyone, any business or user can and set up the ad on Facebook. So, thank you very much. So next, we go to the website development. So we want to invite Ravinder to present the topic website development in PHP Laravel. So let me introduce Ravinder. So Ravinder is a PHP Laravel developer. He developed the website in PHP Laravel. So he's going to explain us how we develop the website in PHP Laravel. So Ravinder, you can start. Hi everyone, I hope my voice is clear. Today I will explain how can I build an inquiry form. First of all, I want to share my screen. I hope my screen is visible. Yes. So
तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंक्वायरी फॉर्म कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं किसी वेबसाइट में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट में इंक्वायरी फॉर्म होता है। तो आज हम इंक्वायरी फॉर्म ही क्रिएट करेंगे। उसमें किस तरह डेटा यूज़र से डेटाबेस में स्टोर होता है और किस तरह उसको फिर रिट्रीव करते हैं, किस तरह दिखाते हैं एडमिन को, या फिर किस तरह गेट करते हैं वेबसाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा प्रोजेक्ट का कोड फाइल है जो कि वीएस कोड में मैंने ओपन किया हुआ है। तो किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें लारावेल में। सबसे पहले तो टेबल बनाना होता है जहाँ पे सारा किसी भी तरह का डेटा स्टोर किया जाता है, और उस टेबल से किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि डेटाबेस से गेट करना हो, दिखाना हो यूज़र को, या फिर डिलीट करना हो, या फिर अपडेट करना हो, उसके लिए हमें फिर मॉडल का यूज करना होता है। इसलिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, उसका फिर मॉडल क्रिएट करते हैं। थर्ड, हमें फंक्शन मतलब बिजनेस लॉजिक लिखना होता है कि हम उस मॉडल में, उस टेबल में, उस मॉडल के द्वारा क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो मेरा तीसरा हुआ कंट्रोलर। तो उसका लास्ट होता है एक राउट भी क्रिएट करना होता है। राउट ये काम करता है कि उस राउट से कौन सा मेथड कॉल होगा जो कि हमने कंट्रोलर में डिफाइन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो इस कमांड के द्वारा PHP आर्टिसन में क्रिएट इंक्वायरी टेबल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस कमांड से मेरा एक टेबल के लिए माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर देगा जो कि माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में होता है। इस कमांड जब मैंने रन किया था तो मेरा इंक्वायरीज करके एक टेबल क्रिएट हुआ। ये टेबल आप लोग देख सकते हैं। इसमें डिफाइन करते हैं उस टेबल में क्या क्या कॉलम रखना है। जैसे अभी के लिए मैंने 4 कॉलम रखा है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और मैसेज। तो टेबल तो मेरा क्रिएट हो गया। टेबल क्रिएट नहीं हुआ डेटाबेस में, बस यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। इस क्रिएट करने के लिए माइग्रेशन कमांड रन करना होता है, माइग्रेट। इससे ये कमांड से मेरा डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर देगा। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ, डेटाबेस में इंक्वायरीज करके एक टेबल है। इसमें टेबल क्रिएट हो गया है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है मॉडल क्रिएट करना, ताकि उस टेबल के साथ ऑपरेशन कर पाए। क्रिएट किया। मॉडल क्रिएट करने के लिए मैंने ये कमांड रन किया, PHP आर्टिसन में मॉडल इंक्वायरी, जो कि मॉडल फोल्डर के अंदर inquiry.php करके मैंने मॉडल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैंने फिलेबल में फील्ड ऐड किया हुआ है कि कौन कौन सा फील्ड मुझे रखना है। जो मेरा फील्ड था उसका नाम मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए रिसोर्सेज के अंदर एक व्यूज फाइल होता है, उसमें किसी भी तरह का पेज मतलब बनाते हैं। तो अभी मैंने इंक्वायरी करके एक फोल्डर रखा है। फोल्डर के अंदर में create.blade.php है, जो कि ये create.blade.php, इसका मैंने राउट डिफाइन किया हुआ है। इसमें ये मेथड जो है रिटर्न व्यू कर रहा है inquiry.create, इंक्वायरी फोल्डर के अंदर में create.blade.php फाइल जो मेरा है, उस राउट से जो मेरा इंक्वायरी राउट है इस इंक्वायरी कंट्रोलर के अंदर में जाएगा, जो कि मैंने इसमें इंपोर्ट किया हुआ है कि कौन सा कंट्रोलर से मैं कॉल कर रहा हूँ। तो उसमें चेक करेगा क्रिएट.मेथड करके, क्रिएट करके जो मेथड बना हुआ है उस राउट को कॉल करेगा। उस राउट में क्या
लिखा हुआ है, क्या फंक्शनलिटी है। उसमें लिखा हुआ है कि एक व्यू रिटर्न करना है। जैसे ही मैं उस राउट को कॉल करूँगा, ये फॉर्म ओपन हो गया जो कि उस राउट में मैंने बनाया है फॉर्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेबल है नेम करके, इनपुट जो है टेक्स्ट में रखा है, ईमेल है, लेबल, पासवर्ड है। इस फॉर्म से डेटा को कैसे सबमिट किया जाए, उसके लिए मुझे कंट्रोलर में मेथड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने स्टोर नाम का एक फंक्शन बनाया, जो कि इसमें मैंने वैलिडेट कर रहा हूँ कि ये फील्ड होना चाहिए नेम, जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। ईमेल नाम से है, कॉन्टैक्ट नाम, सारा में रिक्वायर्ड, और स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा। किसी भी तरह का वैलिडेट रखना हो यहाँ पर रख सकते हैं कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है, कंपलसरी। रिक्वायर्ड नहीं है तो हटा देंगे, इस तरह करते हैं। उसके फिर डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मॉडल का हेल्प लेते हैं। तो उस मॉडल जो कि inquiry.php है, ये मेरा मॉडल का क्लास है, यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और जो कि इंपोर्ट भी करना होता है। मैंने उसका कहाँ पे है, अभी ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर इंक्वायरी, इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसका मॉडल से जब मैं यहाँ पे क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल करूँगा, और ये रिक्वेस्ट जो है सारा ऑल को इसके अंदर ये करूँगा, तो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। यह क्रिएट नाम का फंक्शन लारावेल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर उसके नीचे रीडायरेक्ट करना है, किस राउट पे रीडायरेक्ट करना है, तो इस राउट को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ हूँ, जो कि मेरा inquiry.create। तो देखते हैं किस तरह से सबमिट होगा डेटा। तो ये मेरा स्टोर मेथड है। स्टोर मेथड को मैं इस राउट को जब मैं कॉल करूँगा, यहाँ पे हो रहा है, इस राउट को मैं कॉल करूँगा तो डेटा सबमिट होना चाहिए। तो इस राउट को मैं फॉर्म में कॉल करूँगा। तो ये मेरा inquiry.store है, से ही करता हूँ। नेम से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ जो लिखा हुआ है पाथ, उससे भी कर सकते हैं। राउट नेम से करूँ तो यहाँ फॉर्म में एक्शन नाम का होता है, उसके अंदर मैंने राउट के अंदर में डिफाइन किया हुआ है inquiry.store। जैसे ही बटन सबमिट करेंगे, टाइप बटन सबमिट है, तो फिर ये डेटाबेस में चला जाएगा, और इससे वो इसके अंदर वाला मेथड कॉल करेगा। उसका फिर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। तो चलिए देखते हैं सबमिट करके डेटा को। जैसे ही मैंने सबमिट किया, आकाश नाम से था, जो कि डेटाबेस में मेरा चला गया है। अगर मैं इस डेटाबेस के उस टेबल में देखूँ, इंक्वायरीज टेबल में, तो यहाँ पे दिखाया गया है डेटाबेस टेबल में तो आ गया, बट अभी चाह रहे हैं कि इसको वेबसाइट में दिखाएं। अभी तो फ़िलहाल तो हाँ, वहीं अभी हम लोग करेंगे। तो वेबसाइट में दिखाने के लिए मैंने एक मेथड यहाँ बनाया हुआ है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जो कि उस मॉडल से जितना भी डेटा है, इंक्वायरी ऑल जितना भी है, उसको इंक्वायरीज वेरिएबल में स्टोर करेगा। इस इंक्वायरीज वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको मैं यहाँ उस व्यू में पास करने के लिए कॉम्पैक्ट के अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो अगर मैं इंक्वायरी के अंदर में जहाँ पर डेटा गेट कर रहा हूँ, उस फाइल में जाऊँ और इससे गेट करूँ, तो डेटा मुझे मिल जाएगा। तो inquiry.index फाइल में जाते हैं, इंक्वायरी के अंदर में index.billet.php में यहाँ पे लूप चला दिया, जो कि वहाँ पे उस इंक्वायरीज नाम से मैंने वहाँ पे पास किया हुआ था, जो कि
कि अभी इंक्वायरी से मुझे गेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्वायरी लिख दिया। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, लेकिन वहाँ पे जो आपने पास किया था वही ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो वहाँ से मैं आईडी नेम जितना भी डेटा है यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। तो ये कब गेट होगा? जब मैं इस राउट को कॉल करूँगा तो इंडेक्स मेथड कॉल होगा। और उस इंडेक्स मेथड में क्या लिखा हुआ है फंक्शनलिटी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उस इंडेक्स मेथड से जब उस राउट को कॉल करूँगा तो मुझे सारा डेटा दिखा दूँ। तो देखते हैं इस राउट को कॉल करके। जैसे ही मैंने उस राउट को कॉल किया तो कंट्रोलर के पास गया और वहाँ पे जो लॉजिक मैंने लिखा हुआ था वो मॉडल के द्वारा ऑपरेशन किया और यहाँ पे सारा डेटा दिखा दिया। तो आज के सेशन में इतना ही मेरी ओर से। Thank you, Ravinder. You have explained it very well. So next, the session will be taken by Sourav. So Sourav, you can take your time now. Okay. Hello everyone. Good afternoon. My name is Sourav Kumar. I am a full stack engineer. Today I have to talk about how to build mobile applications using different modern technologies. Like Hi, Sourav. Yeah. yes sir, hello sir. Yeah, hi. So thank you, Ravinder. Thank you very much for explaining the web development in PHP Laravel. So next we introduce the next speaker, Sourav. He is going to explain us the mobile application development and how mobile application is developed, which technology is involved. Okay, so we welcome Sourav to start this session. So Sourav, you can start the session. Okay, thank you sir. So today I have to talk about how to build mobile applications using modern technologies like React and Next.js for front end and backend using Laravel framework of PHP technologies for backend development and to build REST API development. And for mobile applications, have used Capacitor CLI. This is a cross-platform mobile app development. And for API documentation, Swagger technology used for easy API documentation and testing. So in these sessions will demonstrate how to connect these technologies to create a seamless and powerful full stack solutions. Just I have shared my screens to show some designs. Okay. So my screen is visible. Yes, visible. Okay, thank you. So in this we will cover different topics: backend API development with Laravel PHP and front-end applications built using React and Next.js, and mobile applications using Capacitor for both Android and iOS application.
and API documentation using Swagger notation. I have to integrate front end and back ends using REST APIs. And by the end of the session, we will have a clear understanding of how to set up a full stack mobile applications and web applications that works seamlessly across multiple platforms. So some describes about the technologies, basic description of Laravel. What is the use of Laravel PHP? So Laravel PHP is the powerful backend framework for building REST APIs. And React is a JavaScript library for building dynamic user interfaces and single page applications and attractive website and mobile applications for front end. And Next.js is also a React framework for server side rendering and it is used for building a single page applications and a static site generation. And Capshater. Capshater is a cross-platform mobile app framework to build iOS and Android applications with web technologies and uh, mobile CLI. Okay, and different and also different CLI used for develop built mobile applications like React Native CLI, Capshater CLI, and different CLI also. Swagger is a open source tool for API documentation and including annotation for automatic documentation generation. Okay. Okay. So some next to how to develop API and implement your API in your projects. So some basics Laravel API setups and setups. So first we have to create a API. So have to create a Laravel project using uh, using Laravel create commands. So I have to create a project in Laravel. So you have to like this type of framework structure. In this framework, you have two different folder. This framework works on the MVC architecture. MVC stands for model, view, and controllers. Model was for it's a mediator to connect the front end and back ends to handles all the data. And the controller is used for handle all the logics and all the logics and which one is to going to assess your data, you are going to proceed your pages. And last one is views. B is just a blade file या फिर या page it's also called HTML file where to design your software, your mobile applications. Here is my controller files where controller files in controller files we have to create a function where to handles all the logics. So in this controller I have to see the login controller file where to handle the how to login say the user and send the response in API. Okay. In this function also I have to see how to create a REST API and send the response. Okay.
So you have to define a function login, and in this login function you have to require two params, name and mobile number. Through this mobile number, name and mobile number, I have to check that user is authorized or not. If not authorized user, then have to just send the response you are not authorized. Yeah, just another response, please register first. He also give another response as per your requirements. If the user is authorized, then just get the details from my database. Yeah, models, where to define the models. In models, either my user models, just defines the property of users models. In property, just like defines all columns in the tables, like name, email, mobile number, address, roles, username. Yeah, other fields are also defined about the user. Here here if the user is authorized, then have to just insert the records of the user in name, mobile number, and role, which one is registered as a user, yeah, another user, yeah, guest, yeah, admins, depends on the categorized on the role. And username and passwords are the credentials of the user. Next one is here random OTP generate whenever user is login through my device, to just send OTP on the mobile number. Yeah, but on the also send to the WhatsApp. Through the OTP verification, after send the OTP, just verify the OTP, and either with the OTP verified, then just send the message OTP verified successful, and also send user details response. So this is the my login API. In Laravel, how to develop a login API, and here to how to define to call this API. This API is calling from API.php files. Here to define all the routes. Here to define my login API. Either my login API some syntax is something like this: route group prefix auth and function router. And my API is this is the a common routing, say group routings. So this if you require the group routings, then you have to define this type of syntax. Routes post is the methods, API methods. Your API is defines which method, post methods, get methods, put methods, and patch methods. These types of different types of methods. So you have to define any one of the methods to create an API. So I have used post methods for login. So here post is the method, is the API methods, and say first parameters. You have the API parameters. That's also called the API name login. And second parameter is defines the controller file name, and you have this have two parameters required. First one is uh, controller file name, and second one is methods name. And so then we have to go to just definitions, go to login controller file, and have to find the login function. The login function here to this call. So all the API routes defines in the API.php files. That's API routes call the login controller, or in the login controller to call the that's function name.
This is the all about API routes, how to define the API routes and how to call this API. And this API to calling invoke through the browser. So just I have to share and how to calls. Like I have to call the all get all products API. So I have to open my Swagger, okay, and go to that get all product API and select and just click on execute button. So you have to see some get my some response through the API. This is my all products API. After getting this API to connect the front end and back end part. So how to connect front end to back ends. So I've jumped to the front end parts. In this section, in this part, I have to talk how to call any API and get the response and how to implement this API on your front end. In any not only for React and Node.js technology, you have to call same syntax for all technologies. Okay, how to call the API. So API callings have different methods like fetch methods, XJS methods, HTTP methods, curl methods. These all API methods have its own property and on property and on features. So this it depends on your requirement where have to use different API methods. Here I have to use the XJS methods. So how to call the API using XJS methods? So this one lines to call the API through XJS methods. So here XJS methods dot post. In post method, I have to just pass the API URLs. Which one API is calling? Just pass the API URLs. So I have to pass my API URL this. So I have to pass this API URL. You have to call another API. So then I have to pass the another API URL. They have just here to pass the user login API. They have passed the API user login API, and the second parameter is just to pass the inputs in this API. If takes any parameters, then have to just send the parameter also. Then this login API requires two inputs, username and passwords. So I have to pass the in these user data variables, I have set two parameters, username and passwords, and this API gives the some response, and this response is set in the res variables, and from this res variables I just get the tokens. Tokens is the unique to verify user is login or not. And get and store in tokens variables. And also I have to define and initialize user variables. In user variables have to store all the details of the user. That's how to get a response res dot data. In line 40, I have to just check if tokens, and if tokens, then to execute another statements in the if statement, in the if part. If not tokens, I have no tokens, yeah, empty tokens, yeah, tokens have blank value, then execute the else part. And else part just have to pass the message, show the message invalid username password. If have you required another message, then to pass another message also.
In if part, I have called another API get all stores to get all stores, and same as it is same get all stores give some response, and the get them response store in the store data. I have a store data. I have to after a store data. I have called another function, that's login function. That login function defined in my auth context provider. Auth context provider in auth context provider are just stored in the session storage. User is where is user is login or not. Session is used for storing data just but as a global variable. That global variable have to access in anywhere from your projects. So from this concept is used, then don't have to require to again and again you have to repeat to call the API. So you have to prevent repeated to call the API. So you have to use local storage, SSL storage, storage. Yeah, for mobile application, you have to use capacitor storage also. After calling the revoke the API and get the response and sends and gets the data and store the data in variable. After this, I have to integrate this API. So how to integrate this API on the basis of my API response. So here I do have to integrate my API of SOAP stores. So that variable name where to store the all SOAP stores dot. This is the variable name. This is type of array data type. Dot map function is used for iterating one by one to get all the data from your variables one by one. Dot map function just pass the any one parameters name, implies parenthesis. This is the this syntax is called arrow function. If it just here is the I have used the a light tag. You have to also use the different designing also. I have to see. I have to share the how to my designs. So just 1 second. I have to restart my project. To start the React or Next.js project, just execute the command npm run dev. So after executing this command, your project is running. Also, you have to see your project is running on this port number 3000. The by default port is provide 3000. So my project is running. Okay, is running. So here is my design key. I have to use the li tag. In li tag, I have to just pass the. I have to use a store name, a store address, and distance. How much distance here to calculate the your near shop store. So
this is all about front end and back end in this how to uh, uh, integrate front end and back ends both. After complete my front end and back ends, I have to generate how to generate the mobile applications. I generate APK for Android iOS application. So you have to just execute some commands. Go to cmd command prompt या फिर terminal and execute some commands for capacitor CLI. If you have to capacitor CLI, then you have to install capacitor core and capacitor CLI package. After executing these commands, you have to execute npx cap initiate build for building the mobile applications. After you have to execute npm run build, and after this npx cap add OS, and for Android you have to execute npx cap add Android. After executing these commands, opening the native code in Xcode for iOS and also Android Studio, you can build and run the applications. Run the applications on simulator yeah physical device. So this is a and this I have to see the some parts of some designs of Swagger, how to look the Swagger annotation, and some my front end design to screenshots of my React layout applications. That's all about front end and back ends and for mobile application technologies. So we have discussed we have to discuss how to build mobile applications with Laravel for the for the backends, and React Node.js for the front end, and the capacitor for mobile applications, and the Swagger for API documentation. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you, Sourav. You delivered this topic on mobile application development. You explained us about the mobile application using the Next.js, React, and Capacitor, and the API through the Laravel. Yes. So thank you very much again, all, and all speakers. I'll thank you all to make it successful today's session into the site code development community, Ranchi. So thank you again. Have a good weekend. Okay. Thank you.